Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the course of Business Mathematics or Fundamental of Mathematics. I'm your instructor, Mr. Nida Muhammad Khan Al-Chakzai, and I'll be teaching you this course. Well, the main objective of this course is to prepare students for the role as entrepreneurs, producers, and business leaders by developing the skills and abilities that are required for business management problems. The main objective of this course is to enhance students' competency in solving mathematical phenomena or problems. Well, I have uploaded my short notes chapter-wise that are really helpful in comprehending the mathematical problems or phenomena. And I'll also be uploading my short videos with the passage of time, and that will be topic-wise. Well, students, there are some preliminaries that needs to be comprehended before starting our lecture or before starting our subject. That is, first of all, we will be dealing with the definitions of mathematics. That what is mathematics? Well, mathematics is a branch of science that deals with a quantity, shape, and arrangements. Well, we are dealing in our everyday life with mathematics. Whether we are doing any sort of transaction with someone, we are doing mathematics. Whether we are waiting at home for someone, we are doing mathematics. In simple word, we can say that it is the building block for everything. We are using mathematics in every field of life. And we will be focusing on the two branches of mathematics, that is algebra and calculus. Our subject is based upon these two branches of mathematics, algebra and calculus. What is algebra? Basically, algebra deals with the numbers, rational numbers, integers to solve mathematical equations. While in calculus, we will be dealing with the properties of derivatives and integrals. Then, what is business mathematics? Business mathematics are mathematics that are used by business enterprises to solve mathematical transactions or business transactions or business operations. Then we have numbers with us. Well, counting numbers such as 1, 2, 3, 4, 5 and onwards, these are called natural numbers. And if we combine 0 with those natural numbers, it becomes whole numbers. Then we have with us rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers are those numbers that are expressed in the form of ratio, quotient or fractions. Such as 2 by 3 is a rational number. वो नंबर्स जो बटे की सूरत में इस्तेमाल किए जाए वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. What are irrational numbers? Irrational numbers are those numbers that cannot be expressed in the form of ratio, quotient or fractions. These numbers have some specific values such as pi or exponential. These have some specific values. These are called irrational numbers. What are real numbers? When we combine rational and irrational numbers, it becomes real numbers. Then what are integers? Question arises, what are integers? Integers are any number on the line is called integer. What is the line? 0. From 0 and onwards, positive numbers are there, 1, 2, 3, 4, 5. And from below 0, we have negative numbers, -1, -2, -3. These all are integers. The positive side is called positive integers, while the negative side is called negative integers. Then moving towards the next heading, that is equation. From now and onwards, we will be dealing with the equation and its types. Our study focuses on this. While the short definitions are given in the notes that are posted, that are already uploaded on your LMS accounts. So you can see the definitions on your LMS accounts. While an equation states the equality of two algebraic expressions. Now, what do you mean by this? 3x minus 2 is equal to 12. This is called an equation. An equation deals with the two algebraic expressions. That is also an algebraic expression, that is also an algebraic expression, and this is a sign of equality. There is one another definition of equation that
And in equation we have unknown number of variables and a sign of equality. So we have a variable with us x and a sign of equality. Now this is called equation. Then we have with us linear equation. When the power of the variable is equal to 1, that is called linear equation. X is there, its power is 1. Now it is called linear equation. If the power becomes 2, then it is called quadratic equation. If the power becomes 3, then it is called cubic equation. And from 4 and onwards, it becomes polynomial. So linear equation, when the power of the variable is equal to 1, that is called linear equation. Then we have some properties of linear equation. There are some properties of linear equation. The first property is the standard form of linear equation with two variables is ax plus by is equal to c. Here in this equation, in this standard form, x and y, these are called variables. Variables are those values that can be changed, while a, b, c, these are constant or any real numbers. Constant cannot be changed. Such as, if I just write down the example of this, then 2x plus 4y is equal to 20. Now 2, 4, 20. These are real numbers or these are constants, while x and y, these are variables. We have also a standard form of linear equation with one variable, that is ax plus b is equal to 0. This is the standard form for one variable. Here we have with us a variable x, while a, b, 0, these are called constant. A linear equation, the second property of linear equation is this, that a linear equation can have number of variables. Means to say that here we have with us two variables, here we have one variable. We can also have more than one or two variables such as x1, x2, x3 and x4. These 1, 2, 3, 4, these are not the powers. These are used for labels. These are just labeling the variables. If it becomes just like this, x raised to the power 1, x raised to the power 2, x raised to the power 3, then it becomes powers, and then it is not called a linear equation. It will be called a quadratic equation, and this will be called a cubic equation, not a linear equation. The third property of linear equation is the graph of a linear equation will always be a straight line but a non-vertical line. The fourth property of linear equation is linear equation with two variables will always be expressed in the form of this. What is this? It is also called slope-intercept form. Here m is slope, c is y-intercept, which we will be comprehending or which we will be learning in the upcoming lectures. The fifth property of linear equation is x-intercept and y-intercept. Solving the equation for x-intercept and y-intercept. Now what is x-intercept and what is y-intercept? X-intercept is that points where the line crosses the x-axis. Y-intercept is that point where the line crosses the y-axis. The sixth property of linear equation is this, that the power of the variable or the exponent is equal to 1. As we discussed earlier. 7. वैसे इस प्रॉपर्टी को तो ऊपर आना चाहिए था, लेकिन खैर वो मैंने सबसे लास्ट में लिख लिया. The seventh property of linear equation is that linear equation cannot come in root, and linear equation variables cannot take the form of roots, or variable cannot be placed in root form. And the power of the variable is not equal to 1 because
the value of root is 1 by 2. So it is not a linear equation. Another property of linear equation is this, that if two variables are multiplying with each other, then it is not called a linear equation. This is also not a linear equation. This is also not a linear equation. So students, if you are dealing with, or if we are dealing with linear equation, then we must consider these properties. Moving towards the exercise. Students, for the sake of identification, I have written 5 questions and you will have to identify which of them are linear, which of them are non-linear equations. The first question, the first equation, 5y is equal to 10. Now, what is this? Is it a linear equation or a non-linear equation? Students, it is a linear equation because the power of the variable is equal to 1. The second question, students, you will have to identify it whether it is a linear or non-linear equation. Student, it is a linear equation because it is satisfying all the conditions, all the properties. Here 3 is in the root while x is separated from it. So the power of x is equal to 1 and the power of y is also equal to 1. So it is also called linear equation. Here the power of the variable is equal to 3. So it is non-linear equation. Here बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 है, y की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है, लेकिन स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला हमारे साथ बन रहा है. which फार्मूला इज दिस? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला है हमारे पास. ये फार्मूला जब हम लोग ओपन करते हैं तो a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, ये हमारे पास ये फार्मूला है. देन सो स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. बनता कैसे लीनियर इक्वेशन है? अब x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्या है कि रूट और 2 ये हमेशा जो एक दूसरे के साथ कट हो जाते हैं. कट कैसे हो जाते हैं? x प्लस वाई स्क्वायर तो हमारे पास पहले फार्मूले का है और जजर की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होती है? 1 by 2. तो 2 के साथ कैंसिल हो जाती है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. द फिफ्थ इक्वेशन, स्टूडेंट्स, जैसे कि हैं लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज में था कि दो वेरिएबल्स कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशन. हमारे पास क्वेश्चन है 2.1 में क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में वो क्या कह रहा है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट. एक कंपनी है वो 2 प्रोडक्ट्स बनाती है. लेट्स से मैं मिसाल ले लेता हूं, 2 प्रोडक्ट्स ये है, एक पेन है, एक मार्कर है. तो जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि कंपनी कितने प्रोडक्ट बनाती है या सवाल के अंदर कितनी चीजें मेंशन हैं, तो मैं उस हिसाब से वेरिएबल्स जो है वो डाल लेता हूं. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट. अब 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट x होगा, एक y होगा. x क्या है? लेट से वो पेन बनाती है. y क्या है? लेट से वो मार्कर बनाती है. फिर आगे वो क्या कहता है कि ईच यूनिट्स ऑफ ए रिक्वायर्ड 3 लेबर आवर्स. पहले के जो है, जो पहला पेन है उसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं. एंड ईच यूनिट्स ऑफ बी रिक्वायर्स 5 लेबर आवर्स. और बी को बनाने में उसे कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं. तो जैसे ही मुझे पता चल जाता है, मैं इनके दरमियान जो प्लस का निशान डाल देता हूं और जो टोटल घंटे अवेलेबल है वो इसके पास 150 घंटे अवेलेबल है. तो इसके ए पार्ट में उसने यही कहा था कि अगर हम लोग ए को x से रिप्रेजेंट करें, b को y से रिप्रेजेंट करें, तो डिटरमाइन द लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी बन गया. देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही सवाल के अंदर आपको पता चल जाए कि सवाल के अंदर कितनी चीजें मेंशन है, तो उस हिसाब से वेरिएबल डाल दें. अब सवाल में उसके पहले सेंटेंस में ही यही चीज बताई गई थी कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स. तो 2 प्रोडक्ट्स एक x है, एक y है. फिर उसने मजीद डेफिनेशंस में ये कहा कि x के एक यूनिट बनाने में उसे 3 घंटे लगते हैं. Each unit of A requires, ये A था, each unit of A requires 3 labor hours.
each unit of B requires 5 labor hours and the total capacity for labor is 150 labor hours. अब सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ A can be made each day if 25 units of B are manufactured each day. वो कहता है कि कितने यूनिट्स आप X के बना पाओगे अगर आप Y के 25 यूनिट्स दिन में बनाते हो। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल घंटे आपके पास 150 घंटे अवेलेबल है। अब वो कह रहा है कि अगर 150 घंटे में आप 25 यूनिट Y के बनाते हो तो साथ ही में आप X के कितने यूनिट बना पाओगे। तो हम लोग B में क्या करेंगे, उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि हम लोग Y के कितने यूनिट्स बनाते हैं। 3x एज इट इज 5 और ये 25 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। 3x जब 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 and 2 12, 125 is equal to 150। 3x ये 125 उस तरफ जाके यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 125 150 से माइनस होके 25 बन जाएगा। ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 24 पॉइंट समथिंग 24 पॉइंट सॉरी 3 4 8 8.3 समथिंग। हमारे पास हमेशा जोड़ा होता है x और y का, तो उसमें से x के कितने यूनिट्स आ गए, 8.8 यूनिट्स कर ले, और y के कितने आ गए, y के 25 यूनिट्स। ये उसका b पार्ट था। अच्छा स्टूडेंट, इसके c पार्ट में वो कह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ A कैन बी मेड ईच वीक इफ 25 यूनिट्स ऑफ B आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे। अच्छा, उसने B के तो 25 यूनिट जो है वो डे के हिसाब से दे दिए, लेकिन A के यूनिट्स जो है वो वीक के हिसाब से मांग रहा है। लेकिन इसमें B के यूनिट्स उसने कितने दे दिए, 12 दे दिए। तो C पार्ट में B y इज इक्वल टू उसने कितना दे दिया, 12 दे दिया। तो हम लोग पहले डे के हिसाब से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वीक के हिसाब से निकालेंगे। वीक में वो कह रहा है कि अज्यूम अ 5 डे वीक, आपने वीक को 5 दिन कंसीडर कर लेना है। तो 3x प्लस 5, अब 25 की जगह जो है 12 आ गया, 150 हो जाएगा। 3x 5 12 जा 60 हो जाएगा, 150। 3x ये 60 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या चीज रह जाएगी, 90 रह जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ये x के यूनिट्स हमारे पास कितने आ गए, 30 यूनिट्स आ गए। अगर वो y के 12 यूनिट आई मीन मार्कर के 12 यूनिट्स बनाता है तो साथ ही में 150 घंटे में वो x के कितने बनाता है, x के 30 यूनिट्स बनाता है। लेकिन ये तो पर डे के हिसाब से है, पर डे। स्टूडेंट, ये भी पर डे के हिसाब से था। लेकिन इसमें सी पार्ट में उसने ईच वीक का कहा है कि वीक में कितने बना पाओगे, तो उसने डेज भी दे दिए कि आप वीक में कितने दिन काम करते हो, 5 दिन। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 3 15, तो ये कितने बना पाओगे, 150 यूनिट्स ईच वीक।